Hello and welcome to this interesting webinar on creating long-term investors during uncertain times. Friends, we all know that real wealth is created only if an investor stays invested. However, despite multiple knowledge sessions, investors still react to market volatility and take irrational decisions, especially during uncertain times like this. To help you deal with this issue, today we have invited Manish Jain, Deputy CEO, Choice Mutual Fund. Manish has 2 decades of experience in investment management business. An alumnus of IIT Madras and Purdue University, Manish works closely across the ecosystem, that is, clients, distributors, institutional investors, intermediaries, and corporate leadership. So, without wasting time, let me welcome Manish. Manish, welcome to the show. Hi, thanks, Nishant. Thanks for this opportunity, and thank you everybody for joining today. Great, great. So, Manish, I'll start with a question which must be on everyone's mind today. How do Yeah, war or geopolitical events typically impact long-term investment? What is your view? I think it impacts negatively on the long term only if we don't utilize the dip very well. Hmm. And we have seen it multiple times. And let me not take you too much back in the history. Everybody probably here has seen how 2008 gave the dip, and then we saw a big dip like that during COVID. And we have seen two shallow dips in Indian market in 2022 and 2025. So Hmm. whosoever has remained invested and um, accumulated the NAV, the lower NAV during the dips, they had been frankly benefited. Hmm. And of late, if you see what happens, that it impacts you only for 6 to 8 months, and then within 6 to 8 months the things tend to get normalized, and once thing get normalized in 6 to 8 months recovery starts, uh, and your investment is back to green. And I call those units as the wealth accumulation units, because those units are available at lower NAV cheap prices. So I don't think long-term investor should really be worried, especially the people who are making regular investments into the market. Okay. So, Manish, we have often seen that investors often volatility often shakes investors' confidence. And especially during these times, we are seeing and MFDs are witnessing a lot of panic calls, are getting a lot of panic calls from investors. So, how can MFD Yeah. help their clients stay focused on long-term goals during such periods? So you are absolutely right, Nishant. You know what happens, that there are two questions which everybody should ask. Client को return नहीं मिलता है या client रुकता नहीं है. Hmm. Now, typically the problem is the first. Second, कि client रुकता नहीं है. अगर Hmm. आप रुक जाओगे तो मार्केट में आपको रिटर्न मिल जाएगा. एंड अगेन, व्हाट यू आर पॉइंटिंग इज ऑल्सो करेक्ट. पैनिक डिसीजन हो जाता है, रिडेम्पशंस भी स्पाइक हो जाते हैं, एसआईपी भी अभी स्टॉप हुई होंगी. Hmm. And the way mutual fund distributors can explain to the clients कि historically we have seen जब जब SIP stoppage peak पर आता है, Hmm. मार्केट सिर्फ 1 या 2 मंथ्स होता है अपना बॉटम बनाने के लिए. And we have seen this across time frames. And what is that SIP stoppage number? Around 13.5 to 14 lakhs or around 14.5 lakhs. यहाँ पर आपका SIP stoppage हमने देखा है in previous three incidences peak होता है. And then market bottoms out in those period. And that bottoming process and giving you a sharp recovery, it's just, as I said last time, 6 to 8 month process. So give these statistics to your clients, tell them that historically it had been happening, and this is not something which is new. So if somebody can hold on just for 6 to 8 months, then they will be able to ride this wave rather than breaking their investments which they have accumulated for long term. Two things they should also explain. One is that, let us say, if somebody is investing regularly for 10 years,
And hypothetically, let us say 10 rupee becomes 100 rupees. I'm using this just as an example. Person A continues, 10 rupees become 100 rupees. Person B stops the investment even for 2 years in between. That 10 rupee will either become 70 rupees or 80 rupees. So you need to understand that just this stop and start process for 2 years, you are losing good 20-30 rupees in a long term. So these are the two things. If you tell to your clients that it's a process of and waiting period of 6 to 8 months, and you lose a big chunk uh, in a long run, I think they should be able to understand that. Okay. But the real question is related to behavior, Manish. So you know Yeah. that long-term investing is easier said than done. So why do investors struggle to stay invested despite knowing its benefits? So, Nishant, the challenge, frankly, is it's not that they don't choose good funds. I mean, some of them probably have chosen very good funds. Their family and relatives have earned good return around those funds, but the same person is struggling to earn return from the very same fund. One is that your timing of investment. Person A started when the units were lower and kept accumulating those units. Person B started when the units were higher, and then the portfolio is looking red. And that's where the panic starts, that, everybody says that SIP is good, then how come my SIP portfolio is looking bad despite I chose the best funds? So I will explain it in a manner that, everybody has been using mobile these days, and they have an operating system. The issue is that, we don't utilize that operating system to our advantage. Now compare that operating system as your default behavior under stress. How do we behave when the panic happens and when the stress happens? So similarly, when you load a good fund, or let us say load a game on your operating system, how would your operating system behave? If that operating system panics or defaults, then you will not be able to run your mobile properly. Similarly, when you are adding good funds, then make sure that your household operating system is as strong as of an operating system of a good mobile. So if you have implemented that default behavior, if you have implemented that household operating system and made that very strong, then you will not take panic decision, you will not have chaos, you will avoid noise, you will follow the process, you will get into the uh, default behavior. What also happens, Nishant, that of late, when the market goes down like this, and when the portfolio is in red, what we do is that we will say, I will not sell. Let my portfolio recover first, and then once it is green, I will sell that. Typically, your stocks remain in red by the time market recovers, and you don't have money to invest. So, what you need to do, you need to always keep some investable surplus with you, Hmm. so that when the opportunity comes, you are able to accumulate the units during the dips. Now, in the FOMO, if you deploy all the money into the growth assets, or let us say equity assets, when the dips like this come, you do not really have the opportunity to make proper investment. So, create a default behavior so that you are able to follow the process, not breaking that process. And second thing, have some money available. Don't deploy all the money during the FOMO, so that you are able to utilize these kind of dips in a proper way. Third thing is that, most of us will have one salary but multiple demands. The mobility, education, healthcare, lifestyle. It's kind of getting repeated every now and then. And the short-term wants are chasing your long-term money or long-term goals. So do the proper allocation when you are making the investment, that okay, and if you name the goal, you will probably be able to stick to it. Like, let us say my son's education or my daughter's
wedding. So if you give the name to the goal, you will have the uh, clarity, and you will be emotionally attached to it, and you will not break the process. If you keep taking random decisions, then it's very easy to break the process. ओके। सो मनीष, आपके हिसाब से कौन से तीन एक्शनेबल स्टेप्स आज एमएफडीज ले सकते हैं जिससे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर माइंड सेटअप क्रिएट कर सकते हैं अमंग देयर इन्वेस्टर्स? तो निशांत, आई थिंक सबसे पहले तो दे शुड यूज दी स्टेटिस्टिक्स टू देयर एडवांटेज। अभी क्या है, एक रिसेंसी बायस चल रहा है। रिसेंसी बायस क्या है? मार्केट करेक्ट हो गया, हम्म। एंड लोगों के दिमाग में पैनिक आ रहा है कि भाई मार्केट करेक्ट हो रहा है, मार्केट करेक्ट हो रहा है, बाहर निकलो इसमें से। तो ये एक रिसेंसी बायस है। रिसेंसी बायस की वजह से नर्वसनेस भी आ जाती है। हम्म। लेकिन आप अगर पास्ट डेटा देखो, कभी भी एक मार्केट में बड़ा डिप आया है, उसके बाद रिकवरी भी उतनी शार्प आई है। तो सबसे पहले तो आप रिसेंसी बायस हटाओ, वो नर्वसनेस हटाओ, और क्लाइंट के पास जब आप जा रहे हो तो वो डेटा लेके जाओ कि ये देखो, आप ये लास्ट 3 इंसिडेंसेस में जब जब आपने पैसा बाहर निकाला है, एंड इफ यू आर एबल टू डिस्प्ले माई प्रेजेंटेशन, देर इज अ चार्ट इन दैट whenever the SIP स्टॉपेज पीक, उसके हम्म। बाद जो SIP स्टॉपेज वापस नॉर्मल आने में 6 से 8 महीने लगते हैं, तब तक मार्केट काफी रिकवर कर चुका होता है। और जब आप, तो ये एक स्टेटिस्टिक्स आप दिखाइए MFD को, बोलिए कि हम्म। अपने क्लाइंट को ये स्टेटिस्टिक्स दिखाएं, so that they are convinced, come out of this nervousness, come out of this recency bias, and हम्म। with data they are able to talk with the client so that clients get more convincing. That's one step they should take. And secondly, you tell them that currently, if they have to fight the institutions who is हम्म। selling in a big way, हम्म। इंस्टीट्यूशन के पास एक बहुत बड़ा कैपिटल है, उनके पास काफी स्पीड से सेल करने की और बाई करने की कैपेसिटी है, वो हमारे पास नहीं है। एज अ हम्म। रिटेल इन्वेस्टर वी हैव ओनली टू थिंग्स, कि हम सिस्टमेटिकली बाई कर सकते हैं, और जब जब मार्केट में डिप आता है तो हम रीबैलेंस कर सकते हैं। वी कैन रीबैलेंस अवर लमसम इन्वेस्टमेंट, वी कैन रीबैलेंस अवर SIP। तो follow the time, follow the process, so that clients are not going away. And third thing is that don't deploy every money during the FOMO. Have some uh, money available, because many client might be depending at this time कि यार अभी मेरे पास पैसे ही नहीं है लगाने के लिए. So if you give these three advice, then basis that, as an MFD you are able to convince to the clients to stay in the market. वेरी वेरी नाइस पॉइंट्स मनीष। आपके पास एक, आई थिंक आपके पास एक पीपीटी था जिसमें आई थिंक आई हैव सीन दिस काइंड ऑफ एसिड डिसकंटिन्यूएशन वाला, स्पेशली Yes. पॉइंट। सो कैन यू शेयर द स्क्रीन इफ यू आर अलाउड? इफ यू Yes, yes. I mean, do you have the presentation with you? Have you been able to receive the presentation? Just check if you can put that presentation. ओके, वन सेकेंड। इन द मीन टाइम लेट मी गो फाइंड योर प्रेजेंटेशन, बट एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मनीष। द मीन Yeah. दैट कि ये जो लॉन्ग टर्म सेविंग्स हैबिट है, इन्वेस्टमेंट हैबिट, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने क्लाइंट्स के बीच इंस्टिल कर सकते हैं? एक तो रेगुलर नॉलेज दे सकते हैं, और उसके अलावा क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो हैबिट है वो इंस्टिल कर पाए डिस्ट्रीब्यूटर्स? देखो, मुझे लगता है कि समवेयर व्हेन वी टॉक टू द क्लाइंट्स, निशांत, हम डेटा के ऊपर बात नहीं करते हैं आज। आई एम नॉट एबल टू सी हाउ मेनी पीपल आर अटेंडिंग दिस सेशन, बट हाउ मेनी पीपल नो कि निफ्टी 50 का जो वैल्यूएशन है, वो 10 ईयर मीडियन जो होता है, 1 ईयर फॉरवर्ड पी पर, उसके नीचे चला गया है। सेकेंडली, निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो वैल्यूएशन है, दैट इज सेकेंड लोवेस्ट आफ्टर कोविड। और उसका अगर अपन 10 ईयर 1 ईयर फॉरवर्ड पी की बात करें, तो उसका डिस्काउंट आई थिंक 20% के ऊपर है। एंड very rarely it happens Nifty Next 50 trades at a discount to Nifty 50, but this time Nifty Next 50 is trading at a discount to Nifty 50. Now if you are talking in terms of these kind of data, then you are able to convince properly to the client कि भाई देखो, this is how the valuations are moving. If you missed investing during the COVID time,
then at least in one of the instruments which is one of the largest index, और काफी लिक्विड इंडेक्स है, उसके अराउंड काफी स्कीम्स हैं, हमने भी अपनी स्कीम लाई है, then make investment in this index and you can make use of what you missed 6 years back. So जब तक हम ये डेटा पॉइंट पर बात नहीं करेंगे तब तक क्लाइंट कन्विंस नहीं होगा। तो आई थिंक जब भी आप क्लाइंट से बात कर रहे हो, आप स्केमेटिक्स लेके जाइए, आप ये डेटा पॉइंट लेके जाइए, आप चार्ट लेके जाइए, एंड or send them your WhatsApp creatives around these data points, around these charts, then clients will get more convinced. आप खाली कॉल करके अगर बोल रहे हो कि सर बाय द डे एसआईपी सही है, म्यूचुअल फंड सही है, अभी मार्केट नीचे जा रहा है, आप खरीद लो, वो कन्विंस नहीं होगा। ये रिटोरिक सुन सुन के वो थक चुका है। unless you really able to share these schematics, charts and data points with them. ग्रेट पॉइंट मनीष। सो मैं अभी डाउनलोड कर रहा हूँ आपका प्रेजेंटेशन। इन द मेन टाइम आई वांटेड टू नो मनीष कि हाउ कैन वॉलेटिलिटी बी पोजिशन्ड एज एन अपॉर्चुनिटी रादर देन अ रिस्क फॉर इन्वेस्टर्स। I think this is frankly a very interesting question, and many people are not able to utilize the volatility. अब अगर आप इसको समझो कि मोस्टली जो एफपीआई की सेलिंग है वो एक बड़े कैपिटल बड़े स्पीड के साथ वो सेल होता है, तो वहाँ वॉलेटिलिटी काफी आती है। तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि वो एक वेव भी बनाता है और वो एक फ्लोर भी बनाता है। वेव कैसे बनाएगा? जब एक बड़ा कैपिटल बड़ी स्पीड से सेल हो रहा है, जो अभी चल रहा है, सो देयर इज दिस वेव विच हैज कम इनटू द मार्केट, वेव ऑफ सेलिंग। तो ये एफपीआई इंड्यूस्ड वॉलेटिलिटी अगर आप बोल सकते हैं इसको। और फ्लोर कहाँ पे बनेगा? जब ये सेलिंग किसी फैक्टर्स की वजह से रुकेगी, सो डीआईआई इज एनीवे बाइंग कंटिन्यूअसली। एंड जब मार्केट को ऊपर जाने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाइंग चाहिए, सेलिंग भी कहीं ना कहीं पे कम होनी चाहिए या रुकनी चाहिए, और ये प्रोसेस है, इट्स वेव। तो जब एक फ्लोर कहीं पे बन जाएगा, वहां से फिर एक रिकवरी अपनी चालू हो जाएगी। तो उस वोलेटिलिटी को अगर हम प्रॉपरली यूज कर लें, हम अपने लमसम को 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, या हम अपनी एसआईपी को बंद करने की बजाय कंटिन्यूअसली चालू रखें, दैट इज वेयर यू कैन यूज दिस वोलेटिलिटी इन अ प्रॉपर मैनर। अब आपने अगर प्रेजेंटेशन लगाई है तो इस पर आप डायरेक्टली आ जाओ। आई विल गिव यू द स्लाइड नंबर विच इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। Volatility deepens the cost averaging advantage. That is slide number 16, I think. दिस वन Slide number 16. 1616। Yeah, this slide 116, जिसमें वो एक इसके ऊपर है। Yeah. So if you see what is really happening here, that FII sell-off has created the volatility, and an SIP investor or a regular investor involuntarily benefits from that volatility. Because क्या हो रहा है कि हर डिप आपको एक कॉस्ट एवरेजिंग का एडवांटेज देता है। फिर आप ऊपर क्या देखते हो कि एक फ्लोर बन जाता है। जब सेलिंग रुकती है तो एक रिकवरी आती है, एंड जो यूनिट आपने नीचे एक्यूमुलेट की है, वही यूनिट एक एक्यूमुलेटेड वेल्थ क्रिएशन आपको देती है। नाइस। या एंड मनीष, आप वो वाला पॉइंट अगर आप मेरे को बता सकते हैं, वो एसआईपी डिसकंटिन्यूएशन वाला, दैट वन इज इंटरेस्टिंग। अच्छा, उसके लिए व्हाट यू शुड डू, आई विल टेल यू द स्लाइड नंबर। आप आ जाओ स्लाइड नंबर 10 पे। यस। हाँ, ये स्लाइड। यहाँ पर आप देखो कि 2020 हम्म। जनवरी 8 लाख एसआईपी स्टॉपेज नंबर आपको दिखता है। मार्च आते आते तक वो नंबर आपका 14-15 लाख हो गया, जो शेडेड लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट शेडेड एरिया है। उसके बाद वहीं पे मार्केट ने कहीं बॉटम बनाया, और वो 8 लाख नंबर वापस आते आते करीब करीब 6-8 महीने लग गए। दैट मीन्स व्हाट हैपन कि जिन लोगों ने वो 6-7 लोगों ने जिन्होंने अपनी एसआईपी स्टॉपेज की, वो वापस आए मार्केट में, क्योंकि वो 8 लाख का एसआईपी स्टॉपेज वापस 8 लाख के नंबर पे आया। बट पूरे प्रोसेस में आप देखो क्या हुआ, मार्केट निगेटिव से पॉजिटिव हुआ और एक शानदार रिकवरी दी उसने। फिर आप जुलाई 22 में देखो, सेकंड शेडेड एरिया है, वहां पर भी वही हुआ। एसआईपी स्टॉपेज पीक हुआ, वापस आया 6-8 महीने में, तब तक मार्केट पूरा रिकवर हो गया। देन थर्ड
जो हम जुलाई 25 वाले एरिया की बात करें, Jan 25 से जुलाई 25 एरिया की बात करें, सेम फिनोमिना हुआ। हम्म। आप कमेंट्री बॉक्स पढ़ो, हो क्या रहा है। +22% रैली इन 2022 5 मंथ्स, +16% रैली इन 2025 6 मंथ्स। जिन्होंने एसआईपी स्टॉपेज किया वो हम्म। री एंटर हो रहे हैं, लेकिन हायर प्राइस पे। अब आप नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। नेक्स्ट स्लाइड में ये तीनों इवेंट को हमने स्टेटिस्टिकली कैप्चर कर लिया। तो आप क्या हम्म। देखते हो, 14-15 लाख एसआईपी स्टॉपेज है, वहीं पर मार्केट बॉटम बनाता है। और जो भी -13, -17, -30% का लॉस हुआ मार्केट में, ऑन एन एवरेज 6 से 8 महीने में वो रिकवर कर लेता है, और रिकवरी बहुत फास्ट है। तो अब यही है कि जब फियर पीक होता है तो अपने को इन्वेस्टमेंट स्टॉप नहीं करना है, अपने को इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना है। अच्छा, हम्म। दूसरा क्या है कि जो आप इंडिविजुअल स्टॉक में अगर पोजीशन लोगे तो हो सकता है वो 20, 30, 40% डाउन रहेगा। हम्म। बट आप देखो, इंडेक्स की रिकवरी 6-8 महीने में बहुत तेजी से होती है। तो अगर आप इंडेक्स में बने हुए हो, लाइक हम्म। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, जो हमने अभी दो एनएफओ ओपन किए हैं, हम्म। इट इज अवेलेबल एट अ वेरी चीप वैल्यूएशन कंपैरेटिवली। हम्म। तो वो पहले रिकवर होंगे और काफी तेजी से रिकवर होंगे। हम्म। और आप फिर कंपेयर करोगे एक्टिव फंड से, एक्टिव फंड्स जो टिपिकली 20-25% का रिटर्न दे रहे हैं, वो पोटेंशियल अभी एक निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 के पैसिव फंड में हम्म। भी वो एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कि जब ये रिकवरी आएगी तो उतना ही रिटर्न ये इंडेक्स हम्म। दे सकते हैं, कंपेयर टू एक्टिव फंड्स, कंपेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक्स। आई मीन दैट्स व्हाट द डेटा इज काइंड ऑफ हम्म। सजेस्टिंग एज ऑफ नाउ। मनीष, एक ऐसे टाइम पे क्लाइंट कम्युनिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि बुरे टाइम में बोलते हैं ना कि क्लाइंट के पास रहो जिससे वो इर्रेशनल करेक्ट। डिसीजन ना ले। तो या कैसा या कम्युनिकेशन डिस्ट्रीब्यूटर के साइड से जाना चाहिए क्लाइंट्स को, जिससे वो क्लाइंट्स को ये सब डिसीजन लेने से रोक सके? तो उसके लिए व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स और चार्ट इसकी हम्म। बात आप करते हैं और थोड़ा सा उनको स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बारी आ जाइए स्लाइड नंबर 5 पे। हम्म। अब आप क्लाइंट को ये चार्ट दिखाओ कि कैलेंडर ईयर 2024 और 25 में लगातार एफआईआईज ने सेलिंग की, और बहुत जम के सेलिंग की। और डीआईआई ने बहुत तेजी से बाई किया, $90 बिलियन की बाइंग अपन बोल रहे हैं कैलेंडर ईयर 25 में। तो निफ्टी ने क्या किया, एफआईआई सेलिंग को इग्नोर किया। 9% का रिटर्न कैलेंडर ईयर 24 में मिला, 10% का रिटर्न कैलेंडर ईयर 25 में मिला। उसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड पे आते हो, तो हम्म। आपको क्या दिखता है कि 10 इयर्स में क्या चेंज हुआ इंडियन मार्केट में। एफपीआई टू डीआईआई रेशियो जो 2 हुआ करता था, वो 1 से कम हो गया। हम्म। और जो अपने 50 मोस्ट लिक्विड स्टॉक है उसमें डीआईआई अभी जो है वो ज्यादा होल्ड करते हैं एफपीआई से। मतलब क्या है, एफपीआई की सेलिंग तो आएगी ग्लोबल फैक्टर की वजह से, हम्म। लेकिन डीआईआई ग्लोबल फैक्टर की वजह से सेल नहीं करेगा। हम्म। इसलिए मार्केट में आज जो सेलिंग है वो हम इग्नोर, हम्म। मतलब इग्नोर तो नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद सोचो कि यही पुराना मार्केट होता तो शायद 2 लोअर सर्किट लग चुके होते थे अब तक इतनी सेलिंग में। तो आप क्लाइंट को बोलो कि भाई निफ्टी तो पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है इतनी एफपीआई सेलिंग के बाद भी, आज डीआईआई के पास ज्यादा होल्डिंग पावर है कंपेयर टू एफपीआई। हम्म। ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस निफ्टी पॉजिटिव रिटर्न देता है, तो आप ये अभी जो लॉसेस हो रहे हैं उसको इग्नोर करो एंड गो हम्म। विद द डेटा पॉइंट। अभी जो हम्म। रिसेंसी बायस है, नर्वसनेस है, उसको छोड़ के अगर आप पुराने डेटा पॉइंट जो हमने पिछले चार्ट में देखे वो देखते हो, तो यू नो दैट्स हाउ यू शुड बी एबल टू कन्विंस टू द क्लाइंट। अच्छा, एक आप चार्ट उनको और दिखाइए। आप आ हम्म। जाओ अभी स्लाइड नंबर 21 पे, इसके ऊपर स्लाइड। अब कन्विंस करना है क्लाइंट को, तो ये चार्ट आप उनको दिखाओ कि कैसे मीडियन के नीचे गया, और जब जब मीडियन के नीचे गया तब तब निफ्टी ने कितनी अच्छी रिकवरी दी है। जो हम्म। कॉलम्स हैं दे आर निफ्टी लेवल्स, एंड दैट इज द लाइन चार्ट इज द वैल्यूएशन। फिर आप 2 स्लाइड स्किप कीजिए, निफ्टी नेक्स्ट 50 का एक सिमिलर चार्ट बना हुआ है एक स्लाइड छोड़ के। यहाँ पर हम कोविड के नीचे आ गए हैं वैल्यूएशन हम्म। में, मतलब सेकंड लोवेस्ट टू दी
वैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ कोविड। तो हम्म, ये सारी बातें जब हम करेंगे, ये सारे डेटा पॉइंट और स्टेटिस्टिक्स जब हम क्लाइंट के सामने रखेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि भाई ऐसा होता है। हम्म, और ये 2 4 5 6 साल में ये इवेंट्स होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हम्म, दैट्स हाउ दे विल कम आउट ऑफ देयर नर्वसनेस, दैट्स हाउ दे विल गेन द कॉन्फिडेंस एंड देन रिमेन इन्वेस्टेड। हम्म. Got it. So, Manish, we are also talking about SIPs, and you know that mutual fund SIP is the backbone of mutual fund industry. But या during times like this, we witness a lot of discontinuation of SIP, या especially from the retail investors. So, करेक्ट। how can MFDs prevent retail investor, I mean SIP discontinuation, and stop retail investors from discontinuing their SIPs? ओके, गुड क्वेश्चन। उसके लिए आप स्लाइड 12 पे आ जाइए। अब रियल बॉटलनेक क्या है? क्लाइंट रिटेंशन का चैलेंज काफी बड़ा है। दिस इज व्हाट एमएफडीज आर स्ट्रगलिंग, दिस इज व्हाट एएमसीज आर आल्सो स्ट्रगलिंग। Hmm. तो अगर आप ये सोचें कि भाई ये सॉल्व कैसे करें प्रॉब्लम, वो चैलेंज है, वो गलत क्वेश्चन है। राइट Hmm. क्वेश्चन क्या है कि भाई व्हाट टू सॉल्व, एंड व्हाट टू सॉल्व आएगा फ्रेमवर्क से। तो अब आप अगर नेक्स्ट स्लाइड में आते हो, तो जब तक हम क्लाइंट को फ्रेमवर्क नहीं देंगे, तब तक उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ये पैनिक डिसीजन बार बार होगा, ये एसआईपी रिडेम्पशन भी बार बार होगा, और वो बॉटम पे निकलेंगे। जब मार्केट ऊपर जाएगा तब आएंगे, और एक परमानेंट बिहेवियरल लॉस जो है वो लॉक इन करते रहेंगे, हर बार वो लॉक इन करते रहेंगे। वी नीड टू टेल देम कि भाई ये जो बिहेवियरल इशू है, वो बिहेवियरल इशू चेंज तब होगा जब तक आप अपने हाउस होल्ड पोर्टफोलियो को एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ट्रीट नहीं करते हो। दैट्स व्हाई आई ट्राई टू एक्सप्लेन देम इन द लैंग्वेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। Hmm. अगर आपका फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक नहीं है, तो फोन ठीक से नहीं चलेगा। तो Hmm. सिमिलरली हाउस होल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो हाउस होल्ड पोर्टफोलियो भी ठीक नहीं चलेगा। उसमें रिटर्न नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना ही अच्छा फंड डाल दो। इट इज इक्विवेलेंट टू कितना ही अच्छा ऐप डाउनलोड कर दो मोबाइल में। Hmm. और उनको आप एक डेटा पॉइंट और दो कि Hmm. भाई जो नॉन फूड है, दैट हैज बिकम 60% इन अर्बन एंड 53% इन रूरल। मतलब Hmm. नॉन फूड इन द सेंस, जिंदा रहने के लिए जो चीजें जरूरी नहीं है, उस पर आपका खर्चा ऑलरेडी ज्यादा हो रहा है। वो कहाँ से आएगा? आपकी सैलरी तो एक ही है, और मल्टीपल डिमांड है, मोबिलिटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, लाइफ स्टाइल, वो और वो रिपीट हो रही है कंटिन्यूअसली। तो अनलेस यू हिट देम कि भाई हाउ विल यू सर्वाइव, हाउ विल यू सस्टेन इफ यू ब्रेक दिस प्रोसेस, इफ यू कंटिन्यू टू बिहेव द वे यू कंटिन्यू टू बिहेव। तो अगर आप अपना एक डिफॉल्ट बिहेवियर नहीं बनाओगे कि मैं ये प्रोसेस को ब्रेक नहीं करूंगा क्योंकि ये डेटा मेरे सामने, और ये डेटा ये बोलता है कि ये सारी चीजें हो रही हैं मेरे साथ, तो यू हैव टू काइंड ऑफ हिट देम वेरी हार्ड विद दीज स्टैटिस्टिक्स। बिकॉज मुझे नहीं लगता कोई भी क्लाइंट एक्सेल शीट में बैठ के अपना एक्सपेंस ट्रैक कर रहा है। लेकिन जब Hmm. आप उसको बोलोगे कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद यू, you will not be able to achieve your life goal if you keep breaking the process. That means if you keep changing the phone, that's not going to solve the problem, right? Hmm. If you keep adding and deleting the app, that's not going to solve your problem. Hmm. Unless you have a solid, robust operating system phone, that is why, unless you have a solid, robust household operating system. System. Yeah, Got it. Good philosophy, Manish. So, Manish, my next question is about Choice Mutual Fund. So, you are the new entrant in the MF industry. So, I wanted to understand what is your core philosophy, and can you take us through the fund house, the journey of the fund house, the group, Choice Group? sure. So I will talk about this. While I talk, you can come to slide number 27 so that people can read also. So Choice AMC, frankly, as you rightly said, yeah, one slide before it. Yeah. So Choice AMC philosophy is that we are built for every investor, like any other AMC across metros, towns, and Bharat. What is different that we are a next generation, lean, tech-enabled AMC, and our research
is going to be AI augmented research. Also, the differentiation is that, Nishant, if you would have seen that in last 2 3 years, multiple AMCs came and they went directly B2C. So the whole distributor and partner philosophy was missing. Hmm. We want to walk along with our partners and our distributors. So we will have a strong distributor reach, but along with our partners and distributor community. Hmm. And so along with them, we want to make the investing very simple. And we want to launch simple product, scalable products. And that's why in a single line, the philosophy is that simple enough to start, strong enough to stay with. And many people will question that why Nifty 50, why Nifty Next 50 are the first two products. Let us ask the question to ourselves that now, given that we are an 82 lakh crore AUM industry, from where the next 50 lakh crore AUM come, right? That probably will come from the new investor, from the first time investor, from mass household, from B30 investor. Now imagine a situation when market is down like this 8 to 10%, 11%, and the scheme is down 15, 16, 18, 20%. Those type of investors probably will get scared and they may not come back to the market. So Hmm. if this had been the first scheme sold by the distributor, then they will probably not pick up the call. वो बोलेंगे यार अभी मैं आपका क्या कॉल करूं, मार्केट 11% डाउन है, आपने मुझे जो दिया वो 18 20% डाउन है. वो Hmm. एक्सप्लेनेशन है उसका, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता होता है. ये किसी भी फंड हाउस के साथ हो सकता है, बट वो उसको एक्सप्लेन करना, उसका कॉन्फिडेंस ट्रस्ट वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है. Hmm. तो पहला इन्वेस्टमेंट थोड़ा सिंपल रखो, एक Hmm. उसका ट्रस्ट बिल्ड करो जिसमें एक्सप्लेनेशन इजी है, जिसमें रिकवरी काफी इजी है, काफी फास्ट है. तो उसको एक गार्ड रेल मिलेगा कि भाई नेक्स्ट टाइम आप जब उसको कॉल करोगे वो आपका फोन उठाएगा. और जब उसका एक कॉन्फिडेंस मार्केट में आ जाए, उसके बाद आप उसको फिर हाई वोलेटाइल हाई रिटर्न स्कीम पुश करो, या उसको समझाओ कि भाई अब आपने ये थोड़ा मार्केट में समझा है, अब आप जो है स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी एसेट, मल्टी कैप में जाना चालू करो. पहले उसको थोड़ा मौका तो दो मार्केट को समझने का, थोड़ा उसको अपना पोर्टफोलियो बनाने का, थोड़ा उसको पॉजिटिव दिखने का. Okay. और चॉइस ग्रुप के बारे में थोड़ा बताएंगे मनीष जी? तो चॉइस ग्रुप, if we want to understand, I mean, I have a slide there as well. You can come to slide number 38. Choice group actually is more than 30-year-old group. And ये वाला, हाँ. So we have more than 200 branches, more than 5,000 employees, more than 50,000 business advisors. And as you can see, we have pan-India presence. Hmm. So it has 14 business verticals. So we thought that, to complete the product basket, why not we have AMC as well. So that's the reason we Hmm. thought that as the India is seeing the democratization of financial savings, AMC will play an important role. So we kind of connected that dot and give solution to the our own clients and reach out to the clients through mutual fund distributor community. So, I mean, that's in a nutshell. Choice is all about multiple businesses like investment banking, government consultancy, insurance broking, Hmm. wealth brokerage, now the AMC. So that's where the choice stands in terms of business verticals and in terms of reach into pan India. Also, I would suggest for the mutual fund distributors, it is not about only selling the AMC schemes. 14 businesses are there. So, there are multiple opportunities with the Hmm. choice group for people to explore. Hmm. Got it. Got it. Yeah. So, Manish, your company has started with index funds. So, will you remain focused on index fund only, or will you be opening up for active funds as well? Yeah. I mean, so frankly, good question. You come to slide 28, and there we have shown how we will take our journey. Hmm. Yeah. So we are not going to be a passive AMC. We have started with passive schemes for the reasons I explained to you.
Hmm. and definitely we will, get into active schemes also. So it's going to be an AMC which will continue to offer all types of products to all types of investors. Okay. Yeah. Okay. Active And strategies we will launch in financial year 27, which is starting now. So, okay. And which are the active funds you are coming out with apart from these passive funds? so active fund, we haven't named it yet. We Hmm. are forming the strategy depending upon the market conditions, what could be our first best active strategy. Hmm. So I think you will get to know that soon, that which is our first active fund. So I wanted to know that all distributors wanted to understand that what's in store for them. Sure, Hmm. sure. So go to the One second, let uh, me go to reshare the the screen. next slide, Nifty Let me 50. reshare the screen. One second. Yeah, And in the meantime, I request each one of you to share your questions on the Q&A box. I'll take some questions from you as well. Yeah. Which slide, Manish? yeah. So you come to slide number 31. Hmm. So if you look at Nifty 50, what we have done is that we have kept the brokerage, and we have kind of placed it in Q3. Q4 is, very old uh, Hmm. legacy schemes from those big AMCs, and Q1, Q2, as you would have guessed by this time, are from some of the new AMCs who have gone B2C directly. But we want to place ourselves between the two. So uh, if you see, 30 bips is what the spread between the regular and direct in Nifty 50. And 49 bips, if you look at, it's in the Q3, and 11 funds are paying less commission compared to choice AMC. So only 7 funds are giving more. So that's where we have placed Nifty 50 very competitively. And if you come to Nifty next 50, then the spread increases to 40 bips. Next slide. Now here, interestingly, if you will see that the moment TER goes above 70 bips, the average AUM of an AMC drops to 500 crore. And Hmm. if you are below 70 bips, the average AUMs become 3000 crore. So that's the reason we have kept it very competitively at 69 bips. So that, 69 multiplied by 3000 gives you far more brokerage commission and the AUM to AMC, rather than 75 bips multiplied by 500 crore. So that's the balance we have tried to achieve with the 69 bips and a spread of 40 bips in Nifty next 50. Hmm. So you are saying that the medium, so somewhere around 50 basis point is the ideal situation. For the Nifty next 50, if you see the curve which I have shown, in that curve, I am around median Hmm. with 69 bips TER. Hmm. And if you look at in Nifty 50 in the previous slide, I am 5 bips higher than the median. Hmm. Got it. Got it. Got it. Yeah, Yeah. So that brings me to my next question, Manish. So, lot of distributors earn somewhere close to 70 to 80 paise in active equity funds, right? And in passive right. funds, the commission is slightly lower. Then why should they think of doing business in passive funds? Absolutely great question. And I think this is where the answer lies, that do you want to have repeat investors or not?
Hmm. Now, let us be honest that just to earn 70, 80 bips, Hmm. if somebody has sold highly volatile schemes which has a potential to give higher returns, um, Hmm. and now our clients picking their calls. Hmm. So, you know, uh, don't be in a rush. Industry is just 82 lakh crore. If you look at MFI data, Hmm. MFI projection, industry has to become at least another many 80 lakh crores need to be added here. Hmm. And the active MFDs in the industry are only 74,000, 75,000. So don't be in a rush to earn this 30, 40 bips extra. Develop trust with your client, uh, and give them the product which is easy to explain to them when the downturn like Hmm. hits. And then, of course, you go into the active side where you earn more money and your client is able to understand it, the drawdown better. And when you call your client next time, you are able to explain it to them. Hmm. Also, act responsibly because B30 has more equity exposure compared to T30. Hmm. So you need to, have the product which are simple, easy, has more potential to make money in this time, and then sell active. Also understand technically that when the index are trading, indices are trading below their mean and at such a discount, please understand the individual stocks will take time to recover. But index, as we have seen in this data, will recover very fast and quickly. Hmm. So it has a potential to give return more than the active funds. Hmm. So for the commission, if you sell active funds and if they can give that kind of return, well and good. Hmm. But if you have understood the data so far, then that time window to get return in the index historically had been shorter, run up had been faster. So you have more chances to have better confidence and trust with them. And then, Hmm. of course, they are used to of it, and then you sell the active schemes to them. Hmm. Okay. So Manish, we have couple of questions. So Amrish wants to attend the live session. So please let him know when is your next session happening, in which city. So we have now completed all our road shows, Okay. um, but definitely, um, if and if which city Amrish belongs to. So we'll have to find it out. Amrish, if you can Yeah, type your city name, then we can do something with your meeting. So yeah. Sri Guruvel ji wants to understand who is the promoter of Choice Group and how long they are in the investment field. Okay, so I think somewhere in between I mentioned that Choice Group is more than 30 years old group. Hmm. It's a listed company. All the details of the promoters and shareholders are available on the in the public. Um, and in terms of investments, Choice AMC came into existence last year, if I remember correctly. The month I think we got SEBI license in the month of August, and we launched our first scheme, Gold ETF. And after Hmm. that, we are launching these two more schemes. So in terms of legacy, yes, 3 decades. And Hmm. currently, we have Mr. Kamal Poddar, who is the overall head of the group. Hmm. Yeah. Okay. So which are the business Choice is into? Which are the business verticals? Again, so I think this was also mentioned during the discussion that Choice is into investment banking, Hmm. insurance broking, wealth arm, Hmm. and government consultancy. These are some of the major businesses which Choice has. Project consultancy is one of them, and the newest is the AMC business. Okay, great, great. So Manish, so we have seen that a few AMCs wanted to work directly with the investor, but you as an AMC have decided to work with distributors. So what's the rationale behind this thought process?
I mean, frankly, the data point, Nishant, that MFD holds Hmm. great distribution power, Hmm. and the B30, frankly, that one-on-one connect is still very important, and we believe that MFD provide that connect, which I don't think an AMC can do it. Hmm. So basis the plain data point, statistics, and the kind of connect which requires in the B30 plus the first time investors, the Hmm. mass household, where as an advisor and MFD plays an important and big role. Hmm. I think it is very important that you walk the path with the MFDs and not alone. Hmm. Yeah. So, what is your message to MFDs who wanted to work with you? I mean, keep things frankly very simple, especially for the segment where it is first time investor, mass household, B30, and the it is very very important that you know you develop the trust. If you are not able to develop the trust with them, they will not give you the repeat business, and the first time investors also will have a word of mouth from them that I got stuck in the scheme because of so and so, and the next conversion will not Hmm. happen. So that's why it is very very important for MFDs to uh, play that long term game when they are dealing with Hmm. these kind of set of investors, and understand one thing, that Hmm. there are 50 plus AMCs, there are 2000 schemes, new launches are happening every month. Still the penetration is what, just 7%, right? Hmm. The penetration has to go up. The MF AUM versus the GDP ratio is just 8 17 18%. This has a potential to go up in a big manner. So keep all this data point in mind, play the long term game. Don't try to find the shortcut that I am getting higher fee in this scheme, so let me push this scheme. Hmm. Think of the client's benefit in the long term, and then uh, your AUM will grow, and even at a slightly lower TER, you will be able to earn much more fee Hmm. than a one time higher fee. So keep these points in mind, that as the penetration goes up, as the AUM goes up, your commission will keep going up. So don't think of one time higher commission. Think of sustainable long term Hmm. higher commission with the higher AUM. Hmm. Okay. Amrish is from Mumbai, and I think your team, I think Choice team will get in touch with you, Amrish, for more details on road shows. Pankaj wants to understand how to get the PPT of this webinar. So, I mean, I can share with you, and you guys will share with them. How would it work? Can you share an email ID so that all the people can get in touch through Choice email? Yes, yes, you have Janeshwar's email ID who shared the PPT from our side. Hmm. So you let us know, and we can distribute from our end. Okay, okay, sure, sure. So people who are interested in the Yeah, PPT can write to me at nishant@cafemutual.com. It is NISHANT@cafemutual.com. I'll speak to Choice team and help you with the need. I mean, with the PPT. We'll do the needful. yeah. Yeah. And with that, we have come to an end to this interesting session. Thank you so much, Manish, for your valuable time and input. You have given us a lot of insights and food for thought. Nishant, thanks, and thanks to all the attendees. Yeah. Yeah, Pankaj, my email ID is nishant@cafemutual.com. NISHANT @cafemutual.com. CAFEMUTUAL. Yeah. And finally, I thank each one of you for being such a wonderful audience. Have a great day at work, guys. Thank you.